Hello everyone, good evening. Okay, sorry, due to some technical issues, the class got delayed by 15 minutes. Not a problem. Today, actually, logical reasoning, sir, he is not present. He had some event in a bank. He works in a bank. So he is in some event. That is why today's class I am taking again for fractions. This we had already studied last class on finding LCM and all. So we will starting with the fractions. So first let us understand how many kind of fractions are there, because most of the students, most of you have read, but you might have forgot. Fractions, two kinds which we have read: proper fraction, mixed fraction. Proper fraction, if I write, say 5 by 3, this is called a proper fraction. And mixed fraction, if same thing I write it as 1 2 by 3, it is called a mixed fraction. So how are both of these related? Okay, this all things you have already studied, already know, but you may have forgotten. Okay, you may have forgotten. Okay, so the proper fraction, say for example it is 5 by 3, we have to convert it into a mixed fraction. So what we do is 5 divided by 3. When we divide 5 by 3, it will go 3 ones are 3 and remainder becomes 2. So this is called remainder, this is called quotient, this is your divisor, and this is your dividend. So when you write a mixed fraction, we write it quotient and along with it remainder divided by divisor. This is how we write it: quotient, remainder by divisor. So if this same thing we are writing, quotient, remainder divided by divisor. So 1 2 by 3. And let us see opposite. So if I have been given, say suppose a mixed fraction, say suppose I have been given 2 3 by 5, and the question tells me to convert it. Okay, this is mixed fraction to proper fraction, whereas this is proper fraction converting to a mixed fraction, proper fraction converting to a mixed fraction. Okay, so when you have to convert this, then there is a simple formula. Through the same thing we create a formula like dividend is equal to quotient times divisor plus remainder. Quotient into divisor plus remainder. So here when we write, it is always like, here when we write it is dividend upon divisor. This is what we have to write. So my dividend is quotient into divisor. So 2 multiplied by 5 is 10. 10 plus 3, 13. So answer is 13 divided by 5. This is my answer. So here we read how many kind of fractions are there. Okay, proper fraction, mixed fraction, and we also saw how to convert a proper fraction into mixed fraction and a mixed fraction into proper fraction. Along with that, we saw how to divide a number. Okay, so we'll move ahead with 1-2 examples. I will show you how to do 1-2 questions like this if it comes. Okay, so say for example, a question comes like 17 divided by 5 and convert it into a mixed fraction. It is very easy. 17 divided by 5. 5 threes are 15. 17 minus 15 is 2. So my answer will be, just create a bifurcation. So my answer will be 3 complete. 3 is complete and remainder 2 upon 5. 3 complete and 2 upon 5. This is my answer. Similarly, going the opposite way, if you have a question 7 2 by 5.
This question eventually means 7 plus 2 by 5. This is its literal meaning. 7 plus 2 by 5. The same thing I can write it as 7 2 by 5. This is the same thing. So if I want to write this, I will write this as 5 sevens are, or I will write it properly. 5 sevens are 35 plus 2 divided by the denominator 5. So 5 sevens are 35 plus 2, 37. So the answer is 37 divided by 5. This is my answer. This is how I need to convert mixed fraction into proper fraction into mixed fraction. If you want to practice, I will give you few questions you can do at home. Okay. So let us say, for example, we are converting proper fraction to mixed. I will give 3-4 questions for you, and mixed to proper, I will give 3-4 questions to you. The proper to mix, like say for example 12 by 7, 13 by 6, 48 by 5. These 3 questions you can do in mixed fraction. Do 2 1 by 7, 3 1 by 5, 7 1 by 8. These 3 questions you can do from mixed fraction to proper fraction. This is very, very important. Okay, so you can write this down, and let us move towards the most important topic of today, and most important topic as far as your competitive exams are concerned is operation on fractions. So what do we mean by operation on fractions? Operation on fractions. Operation, 4 things comes: addition, subtraction, multiplication, and division, in which addition subtraction is of same kind, multiplication division is of same kind. So today we will be doing addition and subtraction. In the next class I will be starting with multiplication and division. So today's topic, and very, very important topic, is addition, subtraction of fractions. Addition and subtraction of fractions. This is our very, very and most important topic. So let us say, for example, let us take one question. Say for example 2 upon 3 plus 4 upon 5. These are 2 questions. 2 upon 3 plus 4 upon 5. So there is a basic thumb rule. Whenever you add, your denominator, okay, shall be equal. Denominator should always be equal, but here you see denominator here is 3 and here denominator is 5. So you have to convert this denominator into same denominator, and for this you have to find LCM. So LCM of 3 and 5, this is what you have to find. Now those students who have joined new for today's class, you go to my last video of Wednesday, means Wednesday was 16th. Go to my last video on 16th, and you see my LCM and HCF video. From there you will be able to know how to convert or how to find LCM and HCF. This is very, very important, very important. So please see that video of LCM and HCF. Okay, it is on last Wednesday 16th. So LCM of 3 and 5, those who are repeating the class, the LCM of 3 and 5 is 15. Means this 3 I have to make 15, and this 5 also I have to make 15. So if it is 2 by 3 and here it is 4 by 5. So for making it 15, I have to multiply it by 5, and for making this 15, I have to multiply it by 3. See, this is a very basic logic. To convert this 3 into 15, you have to multiply by 5, and if you are multiplying at the denominator, you also have to multiply in the numerator. Okay, similarly, this is 5. If you want to make it 15, you have to multiply it in denominator as well as you have to multiply in the numerator also. So this becomes 5 2s are 10 upon 5 3s are 15, and this becomes 4 3s are 12 divided by 5 3s are 15.
So the number becomes 10 upon 15 plus 12 upon 15. This is the number 10 upon 15 plus 12 upon 15. So now you see your denominator is common for both 15, and here you will do this 10 plus 12. So now 10 plus 12 is 22 divided by 15. This is how you have to solve the question. Okay, again coming to the question 3 and 5. 3 and 5 LCM is 15. Okay, very good. So I have to make this 3 as 15 as well as I have to make this 5 as 15. So to make this 3 as 15, I multiply it by 5. So 3 5s are 15, and to make this 15, I multiply it by 3. So 5 3s are 15. And if I am multiplying in denominator, I have to multiply in numerator as well. So I am multiplying in the numerator 5. Here I am multiplying in the numerator 3. 5 2s are 10 and 3 5s are 15. Similarly, 4 3s are 12, 5 3s are 15. So 10 by 15 and 12 by 15. Just add it and we get the answer. Now if any student wants to do the shortcut in this, okay, there are shortcuts also. Now you want to do the same question, like say for example, it is 2 by 3 plus 4 by 5. So directly if you know that the LCM is 15, so directly I can write 15, directly 15, and directly I can solve the question. So now see how. 3, 15, to make 3 as 15, which I will be multiplying? I will be multiplying by 5. Okay, correct. बीच में ऐड है तो ऐड डाल देंगे. Now to make this 5 as 15, I have to multiply by what? I have to multiply by 3. Again, LCM of 3 and 5 is 15. This we already know. Let us bring it down 15. Now to make this 3 as 15, I multiply by 5. So I write here 5. To make this 5 as 15, I multiply by 3. I will write here 3. Now what is the number over here? 2. I will write 2 here. What is the number over here? 4. I will write 4 here. Now 2 5s are 10 plus 4 3s are 12 divided by 15. And 10 plus 12 is 22 divided by 15. And this is how I get the same answer. 22 divided by 15. That is how I get the same answer. 22 divided by 15. Okay. Let me take one more example. If somebody is writing, I will give you 10 seconds to write. Kindly write it. Or you can take the screenshots also. Okay. Now, let us move to one further question. Same इसी तरीके का एक question और कराता हूँ. Say for example, I have a question. 2 by 7 minus 1 by 8. This is a question. 2 by 7 minus 1 by 8. So first thing is we have to find LCM of 7 and 8. Now LCM of 7 and 8 is 56. This is the LCM. LCM of 7 and 8 is 56. So now let us go directly with the shortcut method, because in any competitive exam you will not be having that much amount of time कि एक एक नंबर को पहले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो फिर माइनस करो. नहीं, डायरेक्टली शॉर्टकट पे आते हैं. 56 डिनोमिनेटर में है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहां लिखो 56, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ टू मेक दिस 7 as 56 you multiply by what? 8. And to make this 8 as 56 you multiply by what? 7. हाँ, इतना पता होना चाहिए भाई, है ना, टेबल इतना तो पता होना चाहिए कि 7 को 56 बनाने के लिए 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 56 बनाने के लिए हम 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ क्या है 2, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2. यहाँ क्या है 1, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा 1. Now 2 into 8 is 16 minus 7 ones are 7 divided by 56. Now 16 minus 7 is 9 upon 56. This is the answer. 9 upon 56. This is the answer. क्या किया मैंने? कुछ नहीं. डिनोमिनेटर में 56, 8 से मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट. सिमिलरली एक मिक्स्ड फ्रैक्शन लेते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल 2 1 by 5 minus 1 3 by 4. ये एक क्वेश्चन है, दोनों कंसेप्ट साथ में. 2 1 by 5 minus 1 3 by 4. ओके, तो 5 डिनोमिनेटर में है, तो पहले डिनोमिनेटर में 5 ले लो. 2 5 is 10 plus 1 11 minus
यहां डिनोमिनेटर में क्या है 4, 4 1 4 एंड 3, 4 1 4 एंड 3 इज 7, यहां पे आ गया 7, 5 2 10 1 11। ओके, अब मेरा क्वेश्चन बन गया 11/5 माइनस 7/4। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन क्या, एलसीएम निकालो 5 और 4 का। तो मेरा लास्ट वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। एलसीएम होगा इसका 20। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल एलसीएम मैंने क्या डाल दिया 20। अभी 5 को 20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे। एंड 4 को 20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 5 को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, 4 को 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई। अब यहां ऊपर नंबर क्या है 11, डालो 11। यहां ऊपर नंबर क्या है 7, तो डालेंगे 7। नाउ 11 4 जा 44 माइनस 7 5 जा 35 अपॉन 20। Now 44 minus 35, it will be 9. So answer will be 9 upon 20. ये मेरा आंसर होगा 9 upon 20. This is how we solve a question of addition or subtraction in fractions. This is very important, very important. बहुत इंपॉर्टेंट है ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ओके फाइन। Okay, so now let us move towards, now let us move ahead and let us see कि इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। आज क्लास शॉर्ट है ना, तो मल्टीप्लिकेशन भी आज ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट अस नाउ सी कि इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। एडिशन सब्सट्रैक्शन तो हमने देख लिया, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और फिर मैं बताऊंगा डिवीजन कैसे होता है। ये सब इजी है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। सो इफ वी कम टू मल्टीप्लिकेशन की मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, तो कोई नहीं। अगर दो नंबर है a बाई बी मल्टीप्लाई बाय सी बाई डी, अगर ये दो नंबर है, ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से, सो a एंड c एंड b एंड d, तो a मल्टीप्लाई बाय c एंड b मल्टीप्लाई बाय d। तो बहुत आसान से एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/4, अगर ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 3 जा 6 और 5 4 जा 20। आंसर आ गया 6 अपॉन 20। ठीक है, और कोई नंबर ले लेते हैं, चलो मिक्स फ्रैक्शन उठा लेते हैं। 3 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2 1/3, ये नंबर उठा लेते हैं। 3 1/5, 5 3 जा 15 और 1 16, तो ये हो गया 16/5 मल्टीप्लाई बाय 3 2 जा 6 और 1 7, ये हो गया 7/3। तो नाउ नेक्स्ट नंबर इज 16 7 जा, तो ये शायद मैंने आपको ट्रिक्स में बताया था। 10 7 जा 70, 7 6 जा 42, 70 40 110, तो ये आ जाएगा 112 डिवाइडेड बाई 5 3 जा 15। दिस इज द आंसर फॉर दिस। तो मल्टीप्लीकेशन इज वेरी वेरी इजी, ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से। नाउ लास्ट कम्स द डिवीजन, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस डिवीजन। अगर दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करना है, तो से फॉर एग्जांपल a बाई बी डिवाइडेड बाई ई बाई एफ, ऐसा होता है a बाई बी डिवाइडेड बाई ई बाई एफ। या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a बाई बी डिवाइडेड बाई ई बाई एफ, दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों ही सेम है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें a बाई बी डिवाइड को चेंज करो मल्टीप्लाई में, ई बाई एफ को उल्टा करो और इसको कर दो f बाई ई। ई बाई एफ को उल्टा करो और इसको कर दो f बाई ई, डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो अब ये हो गया ए एफ अपॉन बी ई, अब ये हो गया ए एफ अपॉन बी ई। सिमिलरली अगर ये ऐसा हो तो इसको कैसे डिवाइड करते हैं, ए बाई बी डिवाइडेड बाई ई अपॉन एफ। अगर ये ऐसा दिखे तो एक्सट्रीम मल्टीप्लाई होते हैं, ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा, ऊपर वाला पूरा नीचे वाले से और बीच वाले बीच वाले से। तो ये क्या हो जाएगा ए एफ अपॉन नीचे क्या है बीई। दिस विल बी माय आंसर, ए एफ अपॉन बीई। ओके, तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। से फॉर एग्जांपल 2/5 डिवाइडेड बाई 3/4, ये मेरा क्वेश्चन है। 2/5 डिवाइडेड बाई 3/4, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2/5 डिवाइड को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और ये 3/4
डिवाइडेड बाई 5 3 जा 15। ये मेरा आंसर हो गया 8/15। दिस इज माय आंसर। ठीक है, सेम क्वेश्चन अगर ऐसा लिखा होता 2/5 डिवाइडेड बाई 3/4, सेम क्वेश्चन ऐसा लिखा होता तो ये जाके मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पे और ये मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पे, तो ये हो जाता 4/2 डिवाइडेड बाई 5/3। और ये करके देख लेना, 4 2 जो होता है 8 और 5 3 15, तो इट कम्स द सेम आंसर। तो ये चारों चीजें, ये जो ऑपरेशंस है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है विथ रेस्पेक्ट टू द फ्रैक्शंस। ठीक है, अब मैं आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन दे देता हूं, आपके पास जब भी समय हो घर पे आप लोग ट्राई करिएगा। किसी को कोई डाउट्स हो तो आई विल ऑल्सो गिव द फोन नंबर ऑफ द एडमिन। आपके पास वैसे है ही क्योंकि आप सारे के सारे ग्रुप्स में हैं। ओके, तो आप अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन ना बने तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन ना बने, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। आपको जो भी एडमिन है हमारी, वो डायरेक्टली आपको फैकल्टी से कनेक्ट करवा देगी। फैकल्टी आपको क्वेश्चन के डाउट्स जो है वो बता देंगे। ओके, तो आज के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, आप लोग ट्राई करिएगा घर पे। 3 1/7 प्लस 2 3/5, 4 2/3 प्लस 6 5/7 प्लस 3 4/9। ये क्वेश्चन ले लो, और ले लो 15/4 माइनस 2 3/5। ये क्वेश्चन ले लो। ठीक है, 3 क्वेश्चन ये ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे 4 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 5/6, 3 4/5 डिवाइडेड बाई 4 2/3। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है, करीब मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए, और थोड़े क्वेश्चन पीछे दिए। फिर भी अगर कोई डाउट हो, ये अभी के अभी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी ये वीडियो, आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक अवर चैनल, लाइक द वीडियो। ठीक है, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मेनी सच good informative content with regards to Goa government exams and national government exams. This channel is exclusively for our Goan students to rise up to the occasion, to go into the government jobs and to secure their future and to train and tell the juniors. Okay, but thoda focus is very much required. Okay, it was very nice meeting you today. Thank you. We are signing off for today. Please solve the questions. In any case of problem, we are there for you. Thank you, guys.